Hello students, this is lecture number 4 on lecture series on differential calculus. So in this topic we are going to discuss Squeeze principle, or we also call this Sandwich Theorem. So let us start. Squeeze principle or Sandwich Theorem. So statement of this theorem is, if f, g and h are three functions such that f of x is less than equal to g of x is less than equal to h of x in some related neighborhood of a point A, and if limit x goes to A, f of x is equal to L, and limit x goes to A, x tends to A, h of x is also equal to L, then limit x tends to A, g of x is also equal to L. You have to prove that limit of the function fx at point x equal to A, x goes to A, and hx as x tends to A, if both are equal and equal to some number L, then limit of gx at when x tends to A is also equal to the same number. So we have to prove this. So before proving this result, let us discuss some examples. ये थ्योरम हमें क्या बता रही है. So all of you, maybe some of you have experience of local train. मुंबई की लोकल ट्रेन में आप अगर आपने कभी सफर किया होगा, then you feel कि अगर कोई एंटर करता है, ट्रेन में एंटर करता है, तो उसमें इतना रश होता है कि जो एक बार बीच में एंटर हो गया तो अब वो एग्जिट गेट पे ही बाहर निकलेगा. इतना तो व्हाट यू फील, आप इस थ्योरम से, इस एग्जांपल से क्या आपने एनालाइज किया कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स, अगर इफ यू हैव अ फंक्शन एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू, अगर एफ एक्स और एच एक्स की लिमिट अगर सेम कोई नंबर एल है तो जी एक्स की लिमिट भी वही नंबर होगी. तो अगर अगले वाला जो पर्सन है लोकल ट्रेन में, जो आगे पर्सन होगा, अगर वो एग्जिट की तरफ जाएगा तो पीछे वाला भी जो एंटर करेगा वो भी एग्जिट की तरफ जाएगा, तो बीच वाला ऑटोमेटिक वो एग्जिट की तरफ जाएगा. एंड अगर आपने कभी सफर किया होगा देन यू फील द सेम. सो मिडिल फंक्शन, मिडिल मैन ऑल्सो मूव्स, वो जाए या ना जाए वो एंटर वहीं से करेगा, है ना, एग्जिट वहीं से करेगा, सेम पॉइंट से. और लेट अस डिस्कस वन मोर एग्जांपल कि अगर दिस इज मैरिज हॉल, ये हॉल है और इसमें ये एक एंट्री एक है. तो हॉल में मान लेते हैं कि यहाँ पर वी हैव वन सिक्योरिटी पर्सन, दिस इज द सिक्योरिटी पर्सन, राइट. और यहाँ कहीं फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर लगाया हुआ है, जिससे हम अगर कभी हॉल के अंदर कोई आग लग जाती है तो इससे हम उसको आग को बुझा सकते हैं.
एंड ऑल द पर्सन इन द हॉल, सारा हॉल जो है फुल है, दीज आर द पर्सन्स इन द हॉल, सारा हॉल फुल है, गैदरिंग है हॉल के अंदर। नाउ सडन क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है एंड हॉल में के अंदर आग लग जाती है। नाउ द ड्यूटी ऑफ दिस पर्सन, इस पर्सन की क्या, सिक्योरिटी पर्सन की क्या ड्यूटी होगी कि ये इस फायर एक्सटिंग्विशर की तरफ जाएगा और इस आग को बुझाने की कोशिश करेगा। बट ये सारा का सारा क्राउड जो है ये कहाँ को जा रहा है, ये मूव करेगा इस गेट की तरफ, लेकिन ये पर्सन कहाँ को मूव कर रहा है, ये पर्सन इन बिटवीन यहाँ कहीं आ जाता है। लेकिन व्हाट हैपन कि ये फोर्स इतनी होगी, ये क्राउड इतना होगा, सारे के सारे लोग, कि ये इसको धक्के के साथ ही इसको बाहर को लेके जाएगा। तो आगे वाले पर्सन भी, ये भी बाहर को जा रहे थे, मिडिल पर्सन भी, ये भी इस एग्जिट की तरफ जा रहे हैं, तो बीच वाले जो पर्सन होंगे वो ऑटोमेटिक वो भी वो धक्के के साथ, वो फोर्स के साथ ही उस एग्जिट की तरफ जाएंगे। सो दिस इज द क्रक्स। हाउ नाउ you think this example and we try to prove this theorem by using this example, right? So let us start the proof of this theorem. Let epsilon greater than 0, however small, be fixed. So given f of x is less than equal to g of x is less than equal to h of x in some deleted neighborhood, some deleted neighborhood of a, that is there exists delta 1 greater than 0, this delta 1 depends upon epsilon, such that f of x is less than equal to g of x is less than equal to h of x for some mod x minus a greater than 0 less than delta 1. Also given that limit x goes to a, f of x is equal to L. So this implies there exists, given epsilon greater than 0, there exists a positive real number, that is delta 2 greater than 0. Delta 2 depends upon epsilon, such that mod of fx minus L is less than epsilon for 0 less than mod x minus a less than delta 2. And limit x goes to a, h of x is also equal to L. So by epsilon delta definition, there exists delta 3 greater than 0. This delta 3 depends upon epsilon, such that mod hx minus L is less than epsilon for 0 less than mod x minus a less than delta 3. Now we have delta 1, delta 2, delta 3. So we take delta is equal to minimum of delta 1, delta 2, delta 3. So if we take delta 1, delta 2 be minimum of delta 1, delta 2, delta 3, then fx is less than equal to gx is less than equal to hx for deleted neighborhood of radius delta. So of distance delta, right? So from, if we choose delta, therefore f of x is less than equal to g of x is less than equal to hx for 0 less than mod x minus a less than delta
and mod fx minus L. This fx minus L is less than epsilon for 0 less than mod x minus A is less than delta, and also mod hx minus L is less than epsilon for 0 less than mod x minus A less than delta. So since let this be 1, so we can open, since mod fx minus L is less than epsilon, this implies fx minus L lies between minus epsilon and epsilon for 0 less than mod x minus A less than delta, or L minus epsilon is less than fx is less than L plus epsilon. We add L, a real number L, all sides, so we get 0 less than mod x minus A less than delta. So let this be 2. Similarly, when we open this mod hx minus L less than epsilon, we get also L minus epsilon is less than hx is less than L plus epsilon for 0 less than mod x minus A less than delta. Let this be. So now from 1, 2 and 3, now from 1, 2 and 3, we have fx is less than equal to gx is less than equal to hx. This is by 1, and by 2 and 3, fx is greater than L minus epsilon, and hx is less than L plus epsilon. So it lies between gx lies between L minus epsilon and L plus epsilon for 0 less than mod x minus A less than delta. So this implies my gx lies between L minus epsilon and L plus epsilon for 0 less than mod x minus A less than delta. This implies minus epsilon is less than gx minus L is less than epsilon for 0 less than mod x minus A less than delta, or mod of gx minus L. We use the definition of mod, so this is less than epsilon for 0 less than mod x minus A less than delta. And if mod gx minus L is less than epsilon, so this implies by definition of epsilon delta, definition of limit, we get limit x goes to A, g of x is also equal to 1. Hence the proof. So this is the proof of Skew's principle or sandwich lemma. This example is very, very important. Even this is the analogous. How we can analogy, how we can uh, think about this result in real life. So there are so many examples to go through the proof. This proof is very, very interesting proof. Thank you. Have a nice day.